So good afternoon everyone. So लास्ट क्लास में हमने डेटा स्टोर एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करके वी क्रिएटेड एप्लीकेशन. So last class में we had created a project, we had created an application, we had stored the data inside the database. वो पूरा 1.5 hours लिया था. तो वही कॉन्सेप्ट आज फिर से करेंगे सो दैट वो और एक बार आपको रिवाइज होगा. एंड वी विल बी डूइंग अ नेक्स्ट पार्ट इन दिस केस, दैट इज वी विल बी सर्चिंग द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस. क्योंकि स्टोर होने के बाद मेरे को डेटा रिट्रीव करना है. सो हाउ डू वी रिट्रीव द डेटा इज व्हाट वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग इन द today's class in this case. अगर टाइम हुआ तो even we will concentrate on how to delete the data from the database. So तीन options आज फिर से और एक बार रिवाइज करेंगे. Okay. So as I told you, we will create one same hospital बोल के project का नाम, application name will be doctor, and we will register a doctor in this case. तो उसके लिए to start with the first one, that is open the command prompt. Command prompt में go to whichever drive where you want to create your project in this case. तो मैं क्या करता हूँ, first I'll type cd. I'm coming to the C drive in this case. So in C drive I have to create one new project in this. तो project create करना है तो it is Django minus admin start project followed by the name of the project. I'll keep it as hospital and click on enter. So एक hospital बोल के project create होगा. So it shows me the command prompt means the hospital project is created. उसके बाद वो inside that folder that is hospital. So cd hospital बोल के type किया. Now I am inside the hospital folder. Inside this I have to create a application. तो application का नाम doctor बोल के रहेगा. So how to create application? It is python manage.py start app followed by name of the application, that is doctor. So click on enter. It will show the command prompt. That means the doctor folder is also created. इतना होने के बाद you have to go to this PC. We have created that in C drive. So I'll open C drive. In C drive, search for hospital and you can see we have created a folder hospital. इसके अंदर hospital बोल के project है, doctor बोल के application. So we first go to the hospital folder in this settings.py के अंदर open the settings.py, scroll down, installed apps बोल के एक list रहेगा. इसके अंदर you have to register your application name, that is doctor. टाइप करो, सेव करो, क्लोज कर दो. ओके, वो सिर्फ एक बार ओपन करना है, उसको क्लोज कर दिए. उसके बाद नेक्स्ट गो टू urls.py. यहाँ पे दो चीज करना है. द फर्स्ट थिंग इज फ्रॉम Django .urls import path separated by comma include. So you have to add a include folder there. Include folder add करने के बाद next very important URL patterns के अंदर you have to add a one more path in this case. Okay, तो इसके बाद add one more path. Inside path double quotation open close comma include simple bracket open close आपका application का नाम, that is doctor.urls. okay, तो इसके अंदर एक path add करते हैं. add करके close कर दो. save this and close it. सेव करना कंपलसरी. ओके, क्लोज करने के बाद नाउ यू कैन गो टू योर एप्लीकेशन प्रोजेक्ट फोल्डर, कॉपी दिस यूआरएल एंड पेस्ट इट इनसाइड द एप्लीकेशन फोल्डर. आपका जो एप्लीकेशन फोल्डर है, एप्लीकेशन फोल्डर ओपन करके पेस्ट दैट यूआरएल. ओके, ओपन द यूआरएल इन दिस केस, डिलीट दीज टू लाइन्स. Remember, most of the students get confused with this. urls.py, there are two, one in your project folder, another in your application folder. application folder के अंदर का आपको डिलीट करना है. ओके, सेव दिस. ये url फाइल क्लोज मत करो, सेव करो, क्योंकि ये बार बार हम यूज करते हैं. ओके, नेक्स्ट. इसके बाद अभी मेरे को आई वांट टू क्रिएट अ फॉर्म डिजाइन. सो HTML फॉर्म चाहिए. सो फॉर दैट create a new folder in the application folder by the name templates. So inside the templates folder you have to create a HTML file in this case. Okay, तो एक HTML फाइल क्रिएट करना है. क्रिएट करके टेम्पलेट फोल्डर के अंदर सेव करना. सो यू कैन ओपन अ न्यू सबलाइम टेक्स्ट फाइल क्रिएट करके सेव क्लिक करो, कंट्रोल एस.
It should be saved inside the templates folder. All your HTML files must be inside the templates folder. Inside this, I will call it as drregister.html. Okay, click on enter. HTML file open. So I'll call it as doctor register. Inside the body tag, I will make use of h3, say doctor register. Inside this, I have to create a HTML form to take inputs from the user. उससे पहले I had told you in the yesterday's class कि अगर कुछ भी मैसेज यूजर को डिस्प्ले करना है तो we put it inside center tag दो फ्लावर ब्रैकेट के अंदर MSG. You can increase the font size also in this case. Say I'll keep font size as H4, close of H4. Okay. Now start with the form tag. Name is equal to frm doc docregistr. You can give any name you want. Method is equal to post. Action is autocomplete equal to off. Most important, when you are giving the method property continuous दीजिए. Don't give any space. If you give space, it will not work in this case. Okay. So form tag open हुआ and close the form tag. I want to take doctor name. उसका नेम चाहिए which is a compulsory field. So मैं क्या करता हूँ, I'll put a font tag star डाल के color red and doctor name को मैं bold letters में डालता हूँ. I need to take doctor name. I need to take his education. I need to take his mobile number, his registration number. Every doctor who is registered will be having a fixed register number. तो उसका register number लेते हैं and last में I will take his password क्योंकि उसको login करना है तो password लेना है. अभी हर एक input के लिए एक एक tag create करो. So to take the input type is equal to text. Name देते वक्त continuous दीजिए, don't give any space. And whatever you have used a label here, use the same name in this case. जैसे यहाँ पे doctor name है, here it should be continuous and small letters. Say doctor name. Okay. उसके बाद it is a compulsory field, so required enter placeholder, enter doctor name. Now most important, जब आप placeholder डाल रहे हो, it should be a sentence case. Sentence case means the first letter of the full sentence will be capital. Only एक letter will be capital in this case. Then after this, it is a first tag, so I'll put autofocus equal to on. Okay, and we can use a pattern property in this. Pattern property के अंदर I need to allow A to Z, capital A to capital Z, slash S slash dot दे सकते हैं. And flower brackets, inside flower brackets, minimum is 2 digits, maximum is some 50 digits. You can even give a max length property equal to 50. That means he can't enter more than 50 characters in this. Okay. So this is the input tag for accepting doctor name. उसके बाद education को भी same दे सकते हैं. It will be type equal to text. I'll put it as education. Enter education. Enter your education. Assuming कि डॉक्टर रजिस्टर कर रहा है, ऑटो फोकस नहीं चाहिए because this is not a first tag in this case. Max length, yes, we can keep it as it is. Then next I need a mobile number in this. So input type is equal to number, name is equal to mobile number, continuous without any space anywhere. Okay, and small letters. Compulsory field है. So enter mobile number. Pattern you will enter 0 to 9 और कुछ भी allowed नहीं है यहाँ पे, so it should be 0 to 9 and minimum 10 digits, maximum भी 10 digits. Max length property नहीं आएगा, remove this. Then we have the registration number in this case, so I'll take a registration number. So in register number, it can be a combination of alphabets and numbers in this case. So what I will do, capital A to capital Z, small a to small z, 0 to 9, वो 10 digit से 15 digit तक रहता है. Okay, change these fields. For example,
registration number. ऊपर जो दिया हूँ same thing I'm giving here. And enter same thing, enter registration number. Then I have the field in this case. उसके बाद पासवर्ड लेना है यूजर के पास से. So enter, sorry, type equal to password. Name is also equal to password. Required field, enter password. Pattern property is not used because यहाँ पे symbols, numbers सब कुछ आ सकता है. Okay, so that is about the password in this. इतना होने के बाद the last one, input type is equal to submit. Name is equal to btn submit. Say value is equal to, you can give register. And register के साथ मैं बोला था कि we add a one more field, that is reset. So type equal to reset I will give there, and I have added the reset. btn reset and value is equal to cancel. तो ये हमारा हो गया फॉर्म डिजाइन. आई टोल्ड यू यस्टरडे द वन मोर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि whenever you are closing the form tag, we have to add one tag here, csrf underscore token. I have explained what exactly was the csrf token in this case. सेव करो. ऑफ कोर्स डिजाइन तो अच्छा नहीं दिखेगा, सो आई हैव टू इंप्रूव द डिजाइन आल्सो इन दिस. कॉपी करो. You can go to ChatGPT and you can ask him to make the modification. So here you can open the ChatGPT and tell him copy paste karo, keep code intact and improve UI using BS5. तो bootstrap 5 यूज करके improve करो UI को. बोला हूँ keep code intact, that means he should not make any changes to my code in this case. Otherwise what happens is he will remove the name property, he will add ID property, he will remove autofocus property. So I don't want him to do such things in this case. So I have told that keep code intact. I'll copy the content and paste, just pura replace that. How it looks and all, we'll see that later. And ये outline नहीं चाहिए. And we use same thing. जब भी हम btn use करते हैं, it is always success and btn. There is a one more class called as warning. Okay, तो उसको change किया. I don't know how the HTML page looks as of now. Whenever you add a new HTML page, you have to go to the urls.py, add one path. वो path add करने से पहले most important, from doctor import views, we have to add a path here. That is, ये हमारे urls.py में I am importing the views.py. Okay, now inside this URL pattern, add a path. Path के अंदर first one, it is doctor register. That is the name of my HTML page. So जो भी नाम दिए हैं, copy paste the name so that you avoid the spelling mistakes. Copy किया, paste, comma, views dot the name of the page again, comma, name is equal to doctor separated by comma. This is the first. जितने HTML pages है उतने path होना चाहिए. I have added one HTML page, I have one path. Tomorrow I will add a one. Today I will add a one more page. उसका भी path, it will be copied in the next line in this case. When you add a urls.py, the very next part is go to views.py, or even you can go to models.py. Models के अंदर हमको एक class create करना है यहाँ पे to store the data. So here I'll create a class by name doctor data. Inside this we have models dot model बोल के एक पैरामीटर पास करना. जितने भी यूजर के पास से मैं इनपुट ले रहा हूँ उतने वेरिएबल्स डिक्लेयर करना है यहाँ पे. से एग्जाम्पल, डॉक्टर नेम, दैट इज द फर्स्ट वेरिएबल, इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट कैर फील्ड. मतलब वो कैरेक्टर स्टोर करेगा. कितने कैरेक्टर स्टोर कर सकता है? वी गिव इट इन द लेंथ प्रॉपर्टी. लेंथ इज इक्वल टू, आई विल गिव 50. ओके, अवॉइड टाइपिंग एवरी टाइम. फर्स्ट टाइम अगर ठीक से टाइप किए हो, कॉपी करो, पेस्ट करो. जस्ट चेंज द नेम ऑफ द वेरिएबल्स.
HTML पेज में आफ्टर टेकिंग द डॉक्टर नेम आई टुक हिज एजुकेशन. तो यहाँ पे भी सेम इन दिस केस, that is, I will take the second field, educaty. After education, I have taken his mobile number to change the variable name number, mobile number. After mobile number, I have taken registration number, registration number. After registration number, I have taken the password and here also password. If you have taken any other field after this, कुछ नहीं है. So that's it. Save करो, ये extra variable को delete करो. We have made changes to the models.py. I have told you, whenever you make any change in the models.py, you have to go to command prompt, execute three commands. That is Python manage.py make migrations. That is a first command always. And डालते ही इतना error आएगा because we made a spelling mistake डॉक्टर का in settings.py. So spelling mistake हो गया है वहाँ पे. So go to settings.py, installed apps में doctor डॉक्टर ठीक है. शायद we have made change somewhere in URLs. doctor है. Let us check. There is some issue. We'll check where that doctor module name do. It should be in settings.py. doctor doctor ही correct है and doctor here also it is correct. यूज में तो अब भी नहीं रहे, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं रहेगा. That's it. शायद we have done that in urls.py. यहाँ पे spelling mistake. So that's why copy paste the things. Okay. So make migration. Again, it will show an error. There has no. यहाँ पे we have added up urls.py में, that is not this, in the application folder. We have added urls.py में एक views.doctor register बोल के बोले हैं. Go to views.py, एक function create करो. Okay. So def function name, inside this request बोल के एक parameter pass करते हैं, colon. Inside this msg is equal to एक empty box. Inside this फिलहाल return render request comma dot html comma flower bracket के अंदर msg colon msg. तो मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, दैट इज डॉक्टर रजिस्टर डॉट html एंड देन आई एम पासिंग द पैरामीटर msg. फिलहाल उसके अंदर कुछ भी डेटा स्टोर नहीं है. ओके, सेव दिस. इसके बाद now let me finally execute make migration. It will say no, वो lots of mistakes. क्यों? return return render में render दो बार आ गया था. Finally the model will be created in this case. ठीक है, तो मॉडल क्रिएट हो गया. उसके बाद we execute migrate. तो माइग्रेशन हो गया. नेक्स्ट इज रन सर्वर. तो रन सर्वर क्लिक करते हैं, इट विल शो क्विट द सर्वर कंट्रोल ब्रेक, मींस आपका कोड सब ठीक है. ओपन द ब्राउजर. इन दिस केस ब्राउजर के अंदर लोकल होस्ट कोलन 8000 स्लैश डॉक्टर रजिस्टर को क्या नाम दिए, कॉपी पेस्ट करो. आई डोंट वांट टू मेक मिस्टेक्स अगेन. सो कॉपी वॉट एवर यू हैव गिवन इन urls.py, यहाँ पे डबल कोटेशन में जो दिए कॉपी करो और उसको यहाँ पे पेस्ट करो. सो you will be able to see the register page. ठीक है, तो रजिस्टर पेज हो गया. we have written the models.py, लेकिन दोनों के बीच में डेटा स्टोर करने का कोड लिखना है. so that we do in views.py. तो views.py में जाओ. यहाँ पे we make use of first line is from
डॉक्टर डॉट मॉडल्स इंपोर्ट स्टार, मतलब वो मॉडल्स में जितने भी क्लासेस है सब क्लासेस को यहाँ पे इंपोर्ट करना है, बिकॉज वो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है हमारे को। ओके, इनसाइड दिस इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड डबल इक्वल टू पोस्ट, अगर पोस्ट है मतलब वहां पे सबमिट बटन क्लिक किया तो वो पोस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। अगर पोस्ट है तो अंदर आके डॉक्टर का डेटा स्टोर करना है। सो डी डी इज इक्वल टू डॉक्टर कॉपी पेस्ट द नेम ऑफ दोज मॉडल्स, जितना कॉपी पेस्ट करोगे उतना एरर्स कम आएगा। I'll do this. नेक्स्ट डी डी डॉट क्या क्या स्टोर करना है, से आई वांट टू स्टोर इज नेम इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट स्क्वायर ब्रैकेट, आपका HTML पेज के अंदर वॉट एवर द नेम यू हैव गिवन फॉर द इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, डॉक्टर नेम है उसको पेस्ट। I told you in the yesterday's class, left side all the variables declared in models.py, right side all the tag names in the HTML page। तो ऐसे 4-5 है, तो जितने भी है आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सबको स्टार्ट करो। दैट इज आई हैव टेकन मोबाइल डॉक्टर नेम हो गया, नेक्स्ट इज एजुकेशन, नेक्स्ट इज मोबाइल नंबर, नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन नंबर एंड लास्ट वन पासवर्ड, इसको निकाल दें। And on the right side whatever you have given in the text box, in this case or text box name property whatever you have given, we have to put that here। So I know that I have kept the same names, so I'll just copy paste directly from here, नहीं तो HTML पेज से copy paste करो। Okay, last that is dd dot save, then you put msg is equal to registered successful। ओके, इतना होने के बाद अगर यहाँ पे क्विट द सर्वर विद कंट्रोल ब्रेक वैसा ही है, मतलब देयर इज नो एरर। ओके, नाउ आई कैन एग्जीक्यूट दिस फॉर्म। सो आई एंटर द नेम ऑफ द डॉक्टर, से सचिन MBBS, से 9876543210, से नेम भी रजिस्टर नंबर आई कीप सेम, नेम सचिन। क्लिक ऑन रजिस्टर, मेरे को मैसेज आ रहा है रजिस्टर्ड सक्सेसफुल, द डेटा गॉट स्टोर। यही काम कल हम 1.5 आवर्स किए थे, आज शायद हाफ एन आवर में हो गया। ओके, add 2-3 records in this case, say add Suman, next MD, next उनका मोबाइल नंबर and I'll keep same registration number, password Suman। और एक ऐड करो किरण, से उनका एजुकेशन BDS, मोबाइल नंबर, ऐड द मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड इज किरण। तो ऐसे क्लिक करते जाओ, द डेटा गेट्स रजिस्टर्ड। वो डेटा सब रजिस्टर हो रहा है। डेटा कहाँ पे सेव होता है? द डेटा इज सेव्ड इनसाइड द डेटाबेस, दैट इज योर बैकएंड। बैकएंड यहाँ पे SQLite 3 बोल के बोला। सो SQLite इज अ डेटाबेस, 3 इज अ वर्जन इन दिस। ओपन करो एंड यू कैन सी ऑल द डेटा, सबका डेटा है यहाँ पे दिख रहा है। क्या समझ में आ रहा है इसमें? नथिंग इन दिस, because the whole database is encrypted inside this. So security is there for the database by default in Python language. ये आपको दूसरा database में ऐसा नहीं मिलेगा। Say if I open any database like MySQL which you people have used, तो MySQL database आपको दिखाता हूँ, आप किसी का भी पासवर्ड 2 सेकंड में देख सकते हैं। I'll just open it and show you. जैसे SGN एक मेरा क्लाइंट का इंफॉर्मेशन है, SGN कॉलेज। ओपन किया SGN, सर्च किया एंड आई एम फेचिंग द डेटा। उनका डेटा मेरे सामने आ जाता है एंड यू कैन सी देयर एवरी डेटा। पासवर्ड भी आपको मिल जाएगा, आगे गए तो पासवर्ड मिल जाएगा आपको। सो देयर इज नो सिक्योरिटी एट ऑल इन केस ऑफ द
अदर डेटाबेसेस, लेकिन पाइथन लैंग्वेज में वो है कि आपको वो सिक्योरिटी ऑटोमेटिक एनक्रिप्ट हो जाता है, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू fetch the data from the SQLite database. Why you are using SQLite is because of that, वो ऑटोमेटिक एनक्रिप्ट हो जाता है। लेकिन सर मेरे को तो देखना है कि थ्रू द सॉफ्टवेयर यू शुड हैव ऑप्शन टू सी द डेटा इन दिस केस। तो डेटा देखना है तो देर आर टू मेथड्स। वन इजीएस्ट मेथड दैट इज सबका डेटा डिस्प्ले कर दो। सेकंड मेथड इज सर्च अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड। ओके, तो इफ आई वांट टू सी ऑल द डेटा एट वंस, सबका डेटा एक बार देखना है, अगर वो समझ गए तो सर्च करने का इज स्टिल मोर इजी। So if I want to display all the data, very simple, create one more HTML page inside templates.py. So I will create a one more HTML page. I will call it as doctor details.html, and it should be stored inside the templates folder only. Okay, click on save and HTML structure लिखता हूँ doctor details. Okay, I'll put the same thing in this. Three. I will not put any data inside this. Means I will not write anything code in this as of now. लेकिन बाद में लिखेंगे ये पेज को। Whenever you have created a new page, go to urls.py. एक नया path add करना है बोल के बोला था, so add a one more path. Okay, ये path के अंदर 3 parameters again. The first one, of course, वो जो HTML पेज है वही नाम दे दो। माइक ऑफ ऑन रो। सो आई विल क्रिएट वन मोर पाथ, उसके अंदर जो HTML का पेज नेम दिया था वही नेम, कॉमा सेम ऊपर का जो है वही है, यूज डॉट नेम ऑफ द फाइल, नेम इज इक्वल टू नेम ऑफ द फाइल। ओके, व्हेन यू क्रिएट urls.py में जब भी एक नया पाथ ऐड करते हैं, कंपल्सरी यू हैव टू गो टू views.py टू क्रिएट अ फंक्शन। अगर नहीं किए तो इमीडिएटली आपका सर्वर एरर दिखा रहा है, इट इज शोइंग दैट देयर इज नो व्यूज में डॉक्टर डिटेल्स बोल के नहीं है बोल के बोल रहा है, बिकॉज वी हैव नॉट एडेड दैट। सो इमीडिएटली आफ्टर क्रिएटिंग अ path you have to add a function। वो फंक्शन का भी सिंटैक्स सेम है, यूज अ डेफ कीवर्ड, द नेम ऑफ द फंक्शन एग्जैक्टली व्हाट यू हैव गिवन हियर, वही नाम यहाँ पे देना है, and pass a parameter that is request colon inside this। Sir, what you will do inside this? As of now, I'll just say msg is equal to empty, and I'll say return render inside this same request parameter, comma the name of the HTML page with the file extension, comma flower bracket के अंदर मेरे को msg वहाँ पे भेजना है, so I'll put it as msg। Okay, sir, now I want to display all the data. Every data is stored inside doctor data class। यहाँ पे डॉक्टर डेटा बोल के क्लास क्रिएट करके उसके अंदर स्टोर किए हैं। सो डेटा फेच करना है तो द डेटा शुड बी फेच्ड फ्रॉम हियर ओनली। So how do we do that? Very simple in this case. In this function, I say doctor doctor details, or I can doctor details is equal to doctor data। Most important, यहाँ पे जो मॉडल का नाम है that should not be the name of the variable, दोनों का नाम अलग अलग होना चाहिए। Okay, dot objects dot all। What you are telling is डॉक्टर डेटा क्लास के अंदर जितने भी जॉब उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, fetch all data in this case। So all the doctors, all the fields will be copied and it will be put inside doctor details। वो डॉक्टर डिटेल्स भी नहीं होना चाहिए, you should not keep this variable name and function name same। तो मैं क्या करता हूँ, I will say doc details, because the name of the variable, the name of the function should not be same। Okay, ये तीनों का याद रखो, 1 2 and 3। नेम ऑफ द मॉडल, नेम ऑफ द वेरिएबल, नेम ऑफ द फंक्शन शुड नॉट बी सेम, हमेशा तीनों अलग 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 होना चाहिए। ओके, नाउ आई हैव गॉट डॉक डिटेल्स बोल के एक वेरिएबल के अंदर सब डॉक्टर्स का डेटा यहाँ पे आ गया। अभी ये HTML पेज को भेजना है। HTML पेज को भेजना है तो वेरी सिंपल,
जैसे आपने रिटर्न रेंडर में एमएसजी को भेजा था, सेम थिंग वी डू इन दिस केस। कॉमा डालो, वेरिएबल का नाम कोलन वेरिएबल, got this? जब भी whenever you want to send any data to the HTML page from the views.py, this is the method that you have to follow in this case. अगर दूसरा वेरिएबल भेजना है, सेम कॉमा डालो, डबल कोटेशन में उसका एक नेम दे दो, कोलन, जो वैल्यू है वो वैल्यू को दे दो। अभी कोई नहीं है, so I'll keep it as it is. Clear with this? ये डेटा आपका HTML पेज को चला गया, HTML पेज में डिस्प्ले करना है इसको। How do we display? It's a very simple. Go to doctor details page. यहाँ पे you display the data from the for loop in this case. So for loop कैसे लिखना है? Very simple. You say for dd in doctor details. This is any variable name you want. If or in दोनों keywords हैं. This is a variable where data is being sent. तो यू कैन सी दिस, यहाँ पे आपको डेटा सेंड हुआ है इस वेरिएबल नाम पे, इसी को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है, ओके। एंड उसके बाद यू से एंड फॉर, मतलब फॉर लूप कहाँ खत्म होता है, से सी लैंग्वेज में यू आर पुटिंग ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, डॉट py फाइल यू आर गिविंग अ इंडेंटेशन, लेकिन इन html फाइल यू हैव टू मेक यूज ऑफ ए कीवर्ड कॉल्ड एज एंड फॉर इन दिस केस, ओके। इसके अंदर डेटा डिस्प्ले करो। डेटा डिस्प्ले कैसे करना है? से वेरी सिंपल, यूज टू फ्लावर ब्रैकेट्स dd डॉट डॉक्टर नेम, डॉक्टर नेम इज अ सेम वेरिएबल नेम विच यू हैव डिक्लेयर्ड इन द मॉडल्स डॉट py। मेरे को उसका एजुकेशन डिस्प्ले करना है, I'll just in the next line I'll say two flower brackets dd dot education, again two flower brackets dd dot I want to display his mobile number, again two flower brackets dd dot the next registration number in this, उसके बाद next again you don't put a dd dot, so dd dot easy है, next one is dd dot password, गलती से भी ये डिस्प्ले नहीं करना, what is, never display the passwords of other users on the screen, तो इसको निकाल देते, so we keep everything except the password field in this case, okay, बस डिस्प्ले हो गया। Is it difficult right to code to write? Most easiest in this case. Save करो and let us see कुछ errors यहाँ पे, डॉक्टर डिटेल्स हमने तो किया था, let us just ensure that the function names are same, doctor details, yes, तो reload हो रहा है, views में कुछ views.py, so here we made a one more mistake in this, the mistake was views.py, okay, so you can see with the server control break आ गया, मतलब there are no errors। जाके आपका पेज ओपन करो, दैट इज गो टू ब्राउजर, ये हमारा रजिस्ट्रेशन पेज है, उसी तरह लोकल होस्ट 8000 स्लैश डॉक्टर डिटेल्स, एंटर क्लिक करो, ऑल द डॉक्टर डिटेल्स आर डिस्प्लेड, तीनों का नाम सचिन है, सुमन है, किरण है, लेकिन अच्छा दिख रहा है नहीं, क्या करना चाहिए, डोंट टेक ज़्यादा हेडेक, कॉपी करो, गिव इट टू ChatGPT इन दिस केस, तो बस बता दो कि पेस्ट किया, improve UI, that's it, तो वो लिखेगा जब तक we'll just add लिखने का काम हो गया उसका, so he's aligning everything, वो कैसे अच्छा दिखना है क्या है सब वो करके देगा हमारे को, just replace it, he has used a table tag और कुछ नहीं, he has used a table tag, वहाँ पे क्या कर रहा है, tr बोल के एक रो क्रिएट कर रहा है, और वो जो डेटा हम डिस्प्ले किए थे सब डेटा को td के अंदर डाल, one extra line you can see here which he has added is for loop dot counter बोल के, वहाँ पे डॉक्टर के बाजू में मेरे को सीरियल नंबर्स आना चाहिए, दैट सीरियल नंबर he has used for loop dot counter in this case, सेव कीजिए, this was a data which it was showing for you, refresh,
the data is displayed. अच्छा दिख रहा है? This is how the data is displayed on the screen. ज़्यादा कोड ही नहीं लिखे हैं. We have just used views dot HTML में इतना कोड दिया, बाकी का तो चैट जीपीटी करके दिया हमारे को. Views dot py में yes we have written some lines in this case. कितने लाइंस लिखे हैं यहाँ पे? सिर्फ 3 लाइन. 3 लाइन में से फर्स्ट लाइन तो ऑलरेडी हम पहले लिख चुके हैं, दूसरा भी हम लिख चुके हैं यहाँ पे रिटर्न रेंडर में. We have just used 1 line of code to retrieve all the data of all the doctors in this case. And of course we have created a path. तो एक पाथ क्रिएट किए, एक नया फंक्शन क्रिएट किए व्यूज डॉट पी वाई में, एंड वी हैव क्रिएटेड अ HTML पेज. ये 3 काम करें टू डिस्प्ले द डेटा. सो वेन एवर यू वॉन्ट टू क्रिएट अ न्यू ऑपरेशन, सेम थिंग, एक HTML पेज क्रिएट करो, URLs डॉट पी वाई में पाथ क्रिएट करो, व्यूज डॉट पी वाई में फंक्शन. अंडरस्टूड दिस पॉइंट? एनी डाउट्स इन दिस? कैन राइट डाउन दीज कंटेंट्स the data, because अगर आपके हॉस्पिटल में there are some 500 doctors, say example, take an example of big hospitals like Vikram hospital या मणिपाल hospital. मणिपाल hospital में उसका बहुत सारे branches हैं. So in that case there are thousands of doctors in all the branches. अगर आप लिखेंगे doctor data dot objects dot all, there are thousands of data that will be retrieved in this. तो उससे क्या होता है, thousands of data retrieve करना is a waste of time and data in this case, because उतना MB has to be retrieved from the cloud, so it takes more time. कभी कभार सिस्टम हैंग हो जाता है बिकॉज सब डेटा रिट्रीव करने के लिए उतना टाइम लगता है. So generally we don't display all the data at a time. We want a search operation in this. जैसे मैं एक डॉक्टर का नाम टाइप करता हूँ, I that only that particular doctor's data should be displayed in this case. So that is how we perform. We need to perform the search operation in these things instead of performing a display operation. तो मैं क्या करता हूँ, I need a text box where I'll enter the name of the doctor. सर्च बोल के एक बटन क्लिक करता हूँ, it should show me the doctor's data in this. Okay, so we will create a separate table, separate page for this. So that means I have to create a one more HTML page basically. Okay, search करने के लिए. So as usual, we give a name in this. Search doctor dot html. Okay, so same, write the HTML structure, search doctor, and same thing यहाँ पे h3 के अंदर search doctor. and जब search कर रहा हूँ I need a next line पे center tag, 2 flower brackets, वो h3 h4 के अंदर MSG. This is common now. Whenever you have created a page, वहाँ पे अगर कुछ message display करना है, so I'll make use of the MSG in this. Now inside this, I create a form tag, name is equal to FRM, name is equal to FRM search doctor. Method is equal to post, and autocomplete equal to off. And whenever you are using a form tag, compulsory उसके अंदर CSRF underscore. Inside this, I need one text box and I need a button in this case. तो मैं क्या करता हूँ, I'll make use of center tag. Center tag के अंदर input type is equal to text. Name के अंदर doctor name. I'm searching based on doctor name in this case. First tag है, so auto focus equal to on. Compulsory चाहिए, so required. Placeholder type करता हूँ, enter doctor name. Okay, and I need one input type is equal to submit. Name is equal to say btn search. Value के अंदर search. Okay, so एक text box, yes. तो read होने हो गया. Okay, required. Okay,
So now I've got one text box and I've got a button to search in this case. तो कंपलसरी फॉर्म टैग के अंदर होना चाहिए एंड दूसरा कंपलसरी CSRF टोकन होना चाहिए. ओके, इतना लिखने के बाद whatever the code you had written to display the doctor's data, ये कोड पूरा कॉपी पेस्ट करो विदाउट एनी चेंज. ये पूरा कोड एक्चुअली यू कैन स्किप दिस. वो डॉक्टर डिटेल्स वो सब स्किप कर सकते हैं. एनीवेज इजी होना है काम मेरे को, तो पूरा उसको छोड़ दो. वी रिमूव दैट. वो डॉक्टर डिटेल्स नहीं चाहिए, ऑलरेडी हमारे पास हेडिंग है. सो टेबल टैग से टेबल टैग तक जो डेटा है कॉपी करो एंड यू पेस्ट इट आफ्टर द फॉर्म टैग. ठीक है, तो वहां पे डिस्प्ले तो वही होगा, डिस्प्ले डेटा इन दिस. ओनली थिंग इज वाई आई नीड टू सर्च द डेटा इन दिस, तो उसके लिए एक फॉर्म टैग ऐड कर रहा हूँ. Clear with this point? Next. After this, whenever you have created a new HTML page, you have to go to urls.py. Yes, to add a new path. So path to paste karo. Whatever the name I have given search doctor.html. Here you put it as search doctor. So same thing, views.search doctor. Name is equal to search doctor. Clear till here? No doubt in this. So I created an HTML page, in that one text box and button to search, then followed by copy pasted whatever the data I had displayed for the doctor details. Added a new path inside the urls.py. Immediately go to views.py and write a new function. That is def search doctor request colon. As of now, MSG is equal to empty. Return render open close request comma search doctor.html separated by comma flower bracket के अंदर MSG colon MSG. I have not searched anything in this, सिर्फ मेरे को पेज देखना है कैसा दिखता है. So I'll copy this, go to urls.py, say I'll वहीं पे ओपन कर सकते हैं. I'll put it in another place, localhost colon 8000 slash search. यहाँ पे मेरे को टेक्स्ट बॉक्स आ गया, सर्च बटन है. इट इज सेइंग नो डॉक्टर्स डिटेल्स फाउंड, क्योंकि अभी मैंने कोई कुछ सर्च नहीं किया. सर फॉर्म अच्छा नहीं दिख रहा है. ऑफ कोर्स फॉर्म अच्छा नहीं दिख रहा है, सो क्या करेंगे, कॉपी द सर्च डॉक्टर डॉट HTML कोड, कॉपी एवरीथिंग, गो टू चैट GPT, पेस्ट कर दो, improve UI. So he will update the code in this case. Okay. So copy this and paste it. Okay, you can just refresh the page. अभी थोड़ा modified दिख रहा है. Okay. Now when I click the name of the doctor, click on search, मेरे को वो डॉक्टर का ही डेटा दिखना है. So मैं क्या करता हूँ, very simple, in the views.py we have to write the code in this. Of course यहाँ पे भी डॉक्टर का डेटा डॉक्टर डेटा बोल के क्लास में स्टोर हुआ है. तो what I will do here is a small change. The change is मेरे को सबका डेटा रिट्रीव नहीं करना है. I want to retrieve only one particular doctor's data in this. So inside this, what we do is say doctor say doc details equal to okay, before this, if request dot method डबल इक्वल टू पोस्ट, मतलब क्या वहां से सर्च करके डॉक्टर का नाम लेके आया है. ओके, सो इफ यू हैज क्लिक्ड ऑन सबमिट, आई शुड परफॉर्म दिस ऑपरेशन. फर्स्ट टाइम तो खाली पेज दिखाना है उसको. वो डॉक्टर का नेम टाइप करके सर्च बटन क्लिक करेगा. देन आई शुड कम टू दिस फंक्शन सर्च फॉर दैट नेम इन दिस. तो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग इट इनसाइड रिक्वेस्ट डॉट मेथड. तो बटन क्लिक करने पर कोई ऑपरेशन you want to perform, that should be written inside the request dot method in this case. Okay, so inside this I will say doc details equal to doctor data dot objects dot filter. all नहीं लिखना, all लिखे तो सबका डेटा आ जाएगा. I am using a one more function called filter, जहां पे मैं कंडीशन डाल सकता हूँ.
कंडीशन क्या है? कंडीशन इज वेरी सिंपल. इन models.py you are searching based on doctor name. Copy this, paste it, equal to request dot post square bracket open close. Name should be equal to what he has given in this tag. सर्च करते वक्त क्या नाम दिया था, ये नाम यहाँ पे मैच होना चाहिए. Understood this? If the doctor name is there, the data will be copied inside this variable. And this variable has to send to the HTML page. तो उसको भी सेम ऊपर कैसे किए थे, we do the same thing in this case, comma doc details colon doc details. So you can see same code what we had done here. Only thing is here we had fetched all the data in this case, but here I am using a condition. Condition क्या है? Doctor का name should match with what you have entered in the text box. Understood this point? Save this. हो गया. Refresh. Say I want to search for the okay. यहाँ पे ये doctor का variable put it outside because I told you yesterday also कि this variable अगर if condition के अंदर डाल दिए it becomes a local variable. ओके, लोकल वेरिएबल को वो फंक्शन के इफ कंडीशन के बाहर यूज नहीं हो सकता, लेकिन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं उसको, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको बाहर डिक्लेयर कर दिए तो नाउ दैट वेरिएबल कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन दैट फंक्शन. ओके, सेव एंड दिस एरर विल बी गॉन. सो नाउ आई विल सर्च फॉर द डेटा दैट इज किरण. है किरण बोल के डॉक्टर, सर्च क्लिक करो, यू गॉट किरण डेटा इन दिस. आई वांट टू सर्च फॉर सचिन, सो टाइप सचिन, क्लिक सर्च, सचिन आ गया. I told Suman, click on enter, सुमन का डेटा आ गया. So now I am searching the data, जिसका मैं information सर्च कर रहा हूँ सिर्फ उसका information यहाँ पे आ रहा है. Understood this point? अभी 4 दिन के बाद I don't remember कि नाम क्या दिया था. Okay, और I will add one more record in this. Say I will add Anup Kumar. Okay, उसका MBBS हुआ है, उसका मोबाइल नंबर, registration same, Anup as a password, register. So I got Anup in this case. Doctor details में you will get Anup Kumar in this case. यहाँ पे Anup को सर्च करना चाहता हूँ, Anup and click search. Did you get Anup? Yes or no? He says no doctor details found. भाई डॉक्टर नहीं है क्या? है. प्रॉब्लम क्या है भाई? Anup's data was not displayed. It is because Anup's name is not only Anup, it is Anup Kumar. आपको पूरा देना पड़ेगा. इवन सचिन का भी मैं गलत कर सकता हूँ. ऐसे सचिन, तब सचिन का रिकॉर्ड आया था, सर्च आ रहा है अभी नहीं, क्यों? I had given in capital letters in this. Okay, तो से सपोज वन पर्सन इज रजिस्टरिंग द डेटा, अनदर पर्सन इज सर्चिंग द डेटा, उसको क्या मालूम होगा कि कौन सा लेटर कैपिटल दिया, कौन सा लेटर स्मॉल दिया, राइट? से व्हेन आई एम एंटरिंग ऑल द डॉक्टर्स डेटा, आई आस्क यू पीपल टू सर्च. आपको क्या मालूम कि मैं कौन सा लेटर फर्स्ट कैपिटल लेटर दिया हूँ, कौन सा स्मॉल दिया हूँ? सब कुछ स्मॉल दे सकता हूँ. आई कैन गिव ऑल कैपिटल, आई कैन गिव वन कैपिटल वन स्मॉल. हाउ विल यू गेट टू नो? वो सब नहीं होना चाहिए सर. आई टाइप सचिन इन कैपिटल, आई टाइप सचिन इन स्मॉल, इट शुड ब्रिंग, राइट? अगर वैसा चाहिए, we make a small change in this. The change is very simple. Doctor name underscore underscore दो बार I contains. Use this keyword, that is underscore underscore I contains. What happens now? In I contains, I stands for ignore case. Contains stands for अगर उसके नाम में ये एक अक्षर है तो भी लेके आएगा. Got this point? जैसे द फर्स्ट थिंग आई सर्च फॉर सचिन कैपिटल, वो नहीं आया था. अभी मैं सचिन को टाइप करता हूँ, आई एम गेटिंग सचिन रिकॉर्ड बिकॉज इग्नोर केस आई यूज कर रहा हूँ. नेक्स्ट, लास्ट टाइम आई सर्च फॉर अनूप, वो डेटा नहीं आया था. अब देखता हूँ आ रहा है, बिकॉज अनूप कुमार बोल के टाइप किया था तो आई वुड हैव गॉट. लेकिन मेरे को क्या मालूम उसका उसका कुमार है क्या, राजकुमार है, मेरे को नहीं मालूम. मैं तो सिर्फ उसका नाम जानता हूँ. सो मैं सिर्फ नाम टाइप किया अनूप. अनूप कुमार में पूरा अनूप नाम है उसमें, सो ही ब्रॉट दैट.
I just type one letter Sachin, Sachin का yes, click on search, दो लोग आ गए because दोनों का नाम yes से start हो रहा है. So now I can search randomly how I want. N बोल के type करता हूँ, I got सब everybody's name because सबके नाम में we have a letter N in this case. So this is more easy to search compared to specific search in this case. Exact name type karna is always difficult task in this case. So for that reason, what we do is we make use of this underscore underscore I contains. So this will bring a specific data. Sorry, the filter function will bring the specific data. I contains will bring the matched data in this case. Got this? Say example, if I use AN, जिसका भी नाम में AN बोल के है उनका डेटा आएगा. और जस्ट सो वो दो लेटर या तीन लेटर या एक लेटर आप टाइप करेंगे, इट विल ब्रिंग द डेटा बेस्ड ऑन दैट. Understood this? Display is very rarely used. Why I showed you display? It is because it is easy once you understand display, search easy हो जाता है. And this is how we perform search operation. मैं Z बोल के टाइप करता हूँ. It says no record, no doctor's details found because Z का नाम पे कोई मैच ही नहीं हो रहा. Understood this point? What I did for this search operation? Very simple. Created an HTML page, created a path, created a function. HTML page में 50% I have copy pasted from 50 से ज़्यादा I have copy pasted from the details page. सिर्फ एक text box और एक search button I have added in this. Even when I am retrieving the data in the views.py, even path URLs में भी copy paste किया मैं. सिर्फ ये नाम change किया सब जगह पे. In the views.py also I could have easily copy pasted this because वहाँ पे बस थोड़ा अलग है. ये स्टेटमेंट सेम है, ये स्टेटमेंट सेम है. यहाँ पे डेटा रिट्रीव करने का थोड़ा अलग है. वहाँ पे बटन क्लिक पे डेटा फेच करना था, सो आई हैव यूज्ड रिक्वेस्ट डॉट मेथड. एंड सिंस आई नीडेड टू फिल्टर द डेटा, इंस्टेड ऑफ ऑल आई एम यूजिंग द फिल्टर इन दिस केस. बट दिस देयर इज नो मच डिफरेंस बिटवीन यहाँ पे 3 लाइन में काम किए थे, यहाँ पे 5 लाइन में काम कर रहे हैं. बस 5 या 6 लाइन पे काम कर रहे हैं. Understood this point? So this is how we perform the search operation in the database in this case. Easy? Can write down.